आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंजरी प्रिवेंशन एंड द स्क्रीनिंग। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का ये टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन कौन से क्वेश्चनियर्स हैं जो हम परफॉर्म कराते हैं किसी भी स्पोर्ट में। कोई भी प्लेयर जब पार्टिसिपेट करता है और उनकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। इंजरी प्रिवेंशन इज प्रोसेस वेयर द एथलीट इज स्क्रीन्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद देयर मस्कुलोस्केलेटल कंपोजिशन। टेस्ट कौन से होते हैं जो मोस्टली परफॉर्म हम करते हैं? फिजिकल टेस्ट हो सकते हैं, फंक्शनल असेसमेंट हो सकती है, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चनियर्स होते हैं, सो दैट प्लान्स कैन बी मेड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क फॉर इंजरी ऑफ द एथलीट आफ्टर स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग इसलिए की जाती है ताकि जो रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। स्क्रीनिंग मेथड में मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है क्वेश्चनियर। द अप्रोच टेकन बाय द लीजर इंडस्ट्री एज अ होल टुवर्ड्स इंजरी प्रिवेंशन इज one that involved a health screening questionnaire. Research suggested that, in conjunction with relevant functional assessment, the questionnaire is a useful starting point in the screening process. The result can be and the result can then be passed on to the sports rehabilitation practitioner for further focused functional assessment of the identified problem areas. Assessment by the means of questionnaire is not, of course, a new methodology, but the integration with the functional and physical test to form a holistic process. A more simplistic approach to the questionnaires can also produce good results in reducing the amount of test that an athlete needs to perform. ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चनियर है। फर्स्ट क्वेश्चनियर इज एक्सटेंडेड नॉर्डिक मस्कुलोस्केलेटल क्वेश्चनियर, गेट आर्म लेग स्पाइन टेस्ट, ऑरिबिरो musculoskeletal pain screening questionnaire, visual analog scale, navicular drop test, measurement of Q angle for the ACL strain, Ravel's model mostly used for the screening of lower back pain, neuromuscular control test for the lower limb. First questionnaire, extended Nordic musculoskeletal questionnaire. Please answer by putting a cross in appropriate box, one cross for each question. Answer every question, even if you have never had trouble in any part of your body. Please answer question from left to right before going down to the next body region. This picture shows how the body has been divided. Limits are not sharply defined and certain parts overlaps. You should decide for yourself which part is or has been affected. ये है हमारे पास एक्सटेंडेड नॉर्डिक मस्कुलोस्केलेटल क्वेश्चनियर। इसमें पूरी बॉडी को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 9 पार्ट्स नेक, शोल्डर, अपर बैक, एल्बोज, फिर हमारे पास हो गए रिस्ट एंड हैंड्स, लो बैक, हिप्स, थाइज, नीज, एंकल एंड फीट। इससे फिर रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, वो लेफ्ट से राइट सारे बॉडी रीजन्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर करेगा और इससे हमें पता चलेगा कि प्लेयर को किस बॉडी पार्ट में कोई मसला है। This questionnaire clearly shows the important areas of the body, so the athletes knows which part the questions are related to, and then follows a logical order through the area, identifying the degree of any possible pain. Research by the Dawson suggests that through the use of extended Nordic musculoskeletal questionnaire, potential pain areas and consequential problems can be identified. Second questionnaire, musculoskeletal pain screening questionnaire, used in research to look the potential problems and subjects pain avoidance. Third is visual analog scale, most reliable and most common for the athletes to assess pain. Functional assessment can follow a screening questionnaire or be the injury prevention process in its entirety. Back and knees are two of the major areas that the screening process needs to assess due to their importance to locomotion and therefore the resultant sporting performance. Gait, arms, legs, spine test, GALS test भी जिसे कहते हैं. The simple GALS test can be used to help identify abnormalities. The testing procedure has been found to be 95% accurate at the helping to identify musculoskeletal abnormalities. GALS does, however, offer different result depending on the condition, with it providing 53% of positive results with acute condition versus 95% in chronic conditions. GALS टेस्ट फर्स्ट रीजन इज गेट। गेट में सिमेट्री चेक की जाती है, स्मूथनेस ऑफ द मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्राइड लेंथ एंड मैकेनिक्स, ये भी हम गेट में चेक करेंगे। एबिलिटी टू टर्न नॉर्मली एंड क्विकली। ए फॉर आर्म्स और हैंड्स को देखेंगे। रिस्ट फिंगर स्वेलिंग डिफॉर्मिटी, स्क्वीज अक्रॉस सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल्स फॉर टेंडरनेस। टर्न हैंड्स ओवर, इंस्पेक्ट मसल वेस्टिंग एंड फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन।
आर्म्स में ग्रिप स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे, पावर ग्रिप है जैसे टाइट फिस्ट बनाकर हम चेक करेंगे, प्रिसाइजन ग्रिप है अपोज ईच फिंगर टू दी थंब। एल्बोज चेक करते हैं फुल एक्सटेंशन में, और फिर शोल्डर्स चेक किए जाते हैं आर्म्स में, एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स, ये मूवमेंट परफॉर्म करके। गेट भी हो गया हमारे पास, आर्म्स भी हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास एल, एल फॉर लेग्स। लेग्स में सबसे पहले तो हम फीट को देखेंगे, स्क्वीज अक्रॉस मेटाटार्सल्स फॉर दी टेंडरनेस, जैसे हमने मेटाकार्पल्स को चेक किया था, और कैलस को भी हम देखेंगे फीट में। नेक्स्ट लेग्स में हमारे पास नी रीजन आ जाता है, नी रीजन में स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी और रिफ्यूजन को देखना है, क्वाड्रिसेप्स मसल बल को चेक करना है, क्रेपिटस ड्यूरिंग पैसिव नी फ्लेक्शन। नेक्स्ट जो रीजन है लेग्स में वो है हिप्स, जिसे थाइस भी कहते हैं, चेक इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस, जी से गेट, गेट असेसमेंट होगी, ए फॉर आर्म्स, एल फॉर लेग्स, और लास्ट पे एस जो है एस फॉर स्पाइन। स्पाइन की इंस्पेक्शन हमने बिहाइंड से करनी है, शोल्डर एंड आइलियक रेस्ट हाइट सिमेट्री चेक करनी है, स्कोलियोसिस को देखना है, पैरास्पाइनल, शोल्डर बटक्स थाइस कार्व्स मसल्स नॉर्मल, पॉप्लिटियर और हैंड फुट स्वेलिंग या फिर डिफॉर्मिटी को देखना है बिहाइंड से ही। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइन की इंस्पेक्शन फ्रॉम फ्रंट, क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल इन बल्क एंड सिमेट्री, स्वेलिंग या फिर कोई वेरस वेलगस डिफॉर्मिटी है नहीं पे तो उसको चेक करना है, forefoot of the midfoot deformity action normal, ear against shoulder on either side to check lateral cervical spine flexion, hands behind head with elbows back, check rotator cuff muscles, acromioclavicular, sternoclavicular and elbow joints. Spine inspection from the side, normal thoracic and lumbar lordosis, normal cervical kyphosis, normal flexion, lumbosacral rhythm from lumbar lordosis to kyphosis while touching the toes. स्पाइन में फिर ट्रिगर पॉइंट्स, टेंडरनेस को चेक करना है, सुप्रास्पाइनेटस मसल टेंडरनेस, एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। इंजरी प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रेवल्स मॉडल। रेवल्स का पहले भी हमने देखा था कि ये लोअर बैक पेन की असेसमेंट के लिए, स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं विद नो स्पेसिफिक कंडीशंस। एथलीट विद स्पेसिफिक लो बैक पेन वुड need to be further screened to assess the full extent of their problems. The Revels model testing procedure involves the patient being asked to assess the back pain currently experienced using a vast visualized analog scale, then the highest amount of pain, and then the lowest amount of pain experienced. Subjects were then asked to complete the exercise. The exercise है the four physical examination components of the Revels criteria for the lumbar physical joint pain. First is standing flexion. स्टैंडिंग फ्लेक्शन जो सेकंड पिक्चर है हमारे पास, सेकंड रिटर्निंग फ्रॉम स्टैंडिंग फ्लेक्शन, थर्ड पिक्चर जैसे एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये फ्लेक्शन से स्टैंडिंग स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग एक्सटेंशन फर्स्ट पिक्चर, और एक्सटेंशन रोटेशन टेस्ट फोर्थ पिक्चर। Rebel's model on completion of the exercise, the subject were then asked to re-evaluate their pain scores on the visualized analog scale. पहले हमने ये चार एक्सरसाइजेस कराने से पहले विजुअलाइज्ड एनालॉग स्केल चेक किया था, फिर ये चार एक्सरसाइजेस कराएंगे और दोबारा से फिर हम पेशेंट्स से विजुअलाइज्ड एनालॉग स्केल का पूछेंगे कि मैक्सिमम पेन कितना है और मिनिमम पेन कितना है। Using the Rebels model, the subjects were categorized into groups that had met the criteria and those that had not. The groups that had met the criteria had a further assessment on the lower back joints. नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास नी एक्सटेंशन टेस्ट। द नी एक्सटेंशन टेस्ट इज यूजुअली यूज्ड टू assess the athlete's ham's muscle length. The athlete will lie in the spine position with their hips flexed on the tested knees at an angle of 90 degrees. The athlete will then ask to flex the knees to its maximum position and the angle recorded. The final value will be 90 minus the recorded angle. If the athlete can extend fully, the hip will be moved to a 30 degrees position and recorded angle will be subtracted from 120 degrees. Next test is modified Thomas test. Modified Thomas test can be used to assess the hip abduction range and hip extension. The test is performed over the edge of the plinth with the athlete lying in the spine position. The adduction and the hip flexion movements are then carried out with assistance from the practitioner, and a goniometer is used to record the angle which is achieved. Next test is combined elevation test. Measures the distance from the base of the thumb to the floor once the arms are fully elevated and the subject is in the prone position with each arm fully extended. This is used to measure the thoracic extension strength and the range of the movement. The rest of the body remains in contact with the ground while holding their breath. Athletes need to hold this position for the duration of the test. Next test is 4-point hold test.
The 4-point hold test is used to measure the strength of the core muscles by assessing the length of the time they can hold a neutral lumbopelvic position, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं. The test is stopped if the athletes start to experience any back pain to reduce the chance of injury. The athlete's time is recorded as a measure for this test with normative non-back pain sufferer aiming for 72.5 plus minus 32.6 seconds. Next test is bridging hold. The bridging hold test assesses the gluteal musculature endurance. Bridging hold assesses the gluteal musculature endurance. The athlete is asked to support the lower back to prevent arcing while their leg position is being confirmed and the length of the time they can hold this position is recorded. A healthy athlete can, with no back pain, should aim for a time of 170.4 plus minus 42.5 seconds. If the athlete experiences back or hamstring pain, then the test is aborted to reduce the chance of injury. The leg must remain fully elevated and fully extended throughout the test and then repeated on the other side using the same process. ये इसी तरह की पोजीशन हमने बनवानी है पेशेंट से. वन बाय वन हम दोनों लेग्स को चेक करेंगे. Next, another area on the body that is of paramount importance to the practitioner is the knee. An injury to the ACL, anterior cruciate ligament, is one of the most serious problems that can happen to athletes and have serious effect on their career. The major risk factors associated with ACL injuries include lower extremity malalignments, ligamentous laxity, lower extremity muscular strength, neuromuscular control अगर पुअर हो तब, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, इंटरकॉन्डाइलर नॉच विड्थ, द बायोमैकेनिक्स ऑफ द एथलीट्स स्पोर्टिंग टेक्निक्स. ये हमारे पास थाई बोन हो गई जिसे फीमर भी कहते हैं. नीचे वाली बोन हमारे पास टिबिया हो गई. इन दोनों के दरमियान हम देख सकते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. और सेकेंड पिक्चर इसमें ये इसकी इंजरी हुई है ACL की. The rehabilitator can only improve and modify the strength and neuromuscular control risk factors, which is why these are the key areas of our screening process. In order to gain full assessment of these risks, the athlete's foot pronation, knee recurvatum, tibial torsion, and posture need to be measured. Neuromuscular control tests for the lower limb often involve a variety of movements, but with common goals to obtain an objective assessment of function and to challenge dynamic knee stability during the landing and deceleration. ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन. फोर splits required jump direction. Injury to the anterior cruciate ligament. A range of tests can be used to achieve these goals with the single leg hop, one leg vertical jump, timed hop, figure of 8 running, side stepping, and steer running. The way the athlete's foot lands during their gait has a large impact on the distribution of the force created. If the level of pronation is too high, then one of the body's natural shock absorber, the heel, will be unable to prevent force from traveling up to the knee. Pronation of the foot. Pronation is made up of simultaneous movement in 3 directions as shown. Eversion transverse plane में, abduction away from the body और dorsiflexion frontal plane में. जब फुट प्रोनेशन में जाएगा तो जितनी भी फोर्स होगी जंपिंग के दौरान जो जनरेट होती है वो नी को क्रॉस करती हुई ऊपर ट्रैवल करेगी. नेविकुलर ड्रॉप टेस्ट. Navicular drop test is commonly used to assess the pronation of the foot and identifies the difference between the subtalar joints in a seated neutral position and weight bearing position. Athletes who have had ACL problems generally have a difference of 13 mm when compared to healthy individuals who will have a difference of just 8 mm. Next is genu-recurvatum. Genu-recurvatum is also known as knee hyperextension and is normally due to the problem in the athlete's skeleton and our movement pattern abnormalities and proprioception. The problem is often increased due to soft tissue laxities, which cause occasional hyperextension of the knee. Over the course of the athlete's career, the extent and occurrences of the hyperextension will begin to place extra strain on the ACL. ये हाइपर एक्सटेंशन लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमारे पास और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नॉर्मल है. ये 180 डिग्री होता है एंगल जो नॉर्मल बनता है, लेकिन जिनो रिकर्वेटम में मोर देन 180 डिग्री एंगल है. ये ब्रेस जो हम यूज़ कराते हैं पेशेंट से. नेक्स्ट है हमारे पास क्यू एंगल.
The increase of the Q angle can be indicator of the problem occurring in the knee and of increased strain being placed on the ACL. The Q angle is between the force line of the quadriceps and the line of pull of the patella tendon. The Q angle in a normal athlete is between 10 to 15 degrees. The Q angle is a useful measure of potential knee problems. ये Q angle की measurement होगी हमारे पास ऊपर ये SIS से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि पेटेलस से मिड पॉइंट ऑफ पेटेलस से पास करती है और नीचे टिबियल टुबरकल से स्ट्रेट लाइन पास की जाती है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो Q एंगल है। इंक्रीज्ड इन Q एंगल आर एसोसिएटेड विद femoral एंटीवर्जन, एक्सटर्नल टिबियल टॉर्शन, लैटरली डिस्प्लेस्ड टिबियल टुबरकल और जीनोवेल्गस। और अगर डिक्रीज्ड Q एंगल की बात की जाए तो इसके अपोजिट कंडीशंस हो जाएंगी, femoral रेट्रोवर्जन हो जाएगा, इंटरनल टिबियल टॉर्शन, मीडियली डिस्प्लेस्ड टिबियल टुबरकल और जीनोवेरस। The strength of the muscles around the knee has an important role to play in stabilizing the joint and therefore reducing the chance of injury. If the hamstring is more than 15% weaker than other lower limb muscles, then the athlete is 2.6 times more likely to suffer lower limb injury. तो हमने bilateral दोनों legs के strength पे काम करना होगा। अगर मसल imbalance होगा तो ये चीज़ लीड कर सकती है further injuries को। The role of equipment used in the athletes' chosen sports can also have major effect on the potential injuries that they could suffer. For example, the height of the saddle in the cycling can have implication for a range of conditions in the knee of cyclist. If the saddle is too high, the athlete could suffer from the IT band pain and potentially suffer from ACL injury. 3D analysis is the gold standard measurement for the lower limb angles and velocity variables. When an injury occurs, the body adapts by ensuring extra force is exerted by surrounding tissues, for example, the ligaments and other supporting muscles. When the muscles has recovered from damage, the extra force continues to be exerted by those tissues and therefore the muscles become deactivated and untrained. Knowledge of the movement and which muscle can perform the movement can help in correctly assessing the injury or the potential problem. During locomotion, bone-on-bone contact force is apparent but limited when the correct muscles are activated. If those muscles become deactivated, then bone-on-bone force increases and can result in injury. The importance of a cool down is also an area that needs improvement, with the traditional approach of concentrating on the warm up before practice being the dominant injury prevention measure. Validity and reliability. वैलिडिटी होती है कि हमारे रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के कितने नियर अबाउट्स हैं, और रिलायबिलिटी होती है कि अगर हम सेम टेस्ट बार बार करते हैं और हमें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ये रिलायबिलिटी। Risk assessment in injury prevention and musculoskeletal screening is a form of assessment of risk on an athlete. Rather than viewing this process as a collection of singular tests, it should be viewed as building a picture of the athlete's functional capabilities and performance metrics. Once this matrix is established, the weak links can be worked on to improve the overall metrics and therefore the resultant performance of the athlete. With the correct identification of the weak links, injury prevention programs can become more specialized and therefore meet the needs of an individual athlete to eradicate potential problems occurring due to body overcompensating due to a weakness. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।